choose the training experience on the training data, choose the target function, the model, and how to represent the target function, and choose the learning algorithm to infer the target. Okay, so this was the theoretical. Now actually क्या होता है, why we use separate data for training and testing? So what is the logic behind that? So how we create a basic learning algorithm is that using the training data, we build a hypothesis or a model. Okay, hypothesis कहते हैं कि like we are uh, building a model or a hypothesis in such a way that it fits the training data as much accurate as possible. Fit का मतलब यहाँ पे क्या है कि it should uh, it should give as much less error as possible for the training data at least. Okay, and then uh, when we complete that fitting in the training data, so the model that we get at the end, we represent it as the target function or a or our hypothesis, and now or our model, and we now test our model on the testing data, जिसकी हमें लेबल्स एक्चुअली पता नहीं होते हैं या फिर हम एक्यूरेसी रखने के लिए उसे लेबल्स नहीं देते हैं एटलीस्ट, और फिर हम उसे टेस्ट करते हैं उस डेटा पे, एंड देन वी चेक कि कोई अननोन पॉइंट के लिए हमारी बिल्ड मॉडल या बिल्ड हाइपोथेसिस कैसे वर्क करेगी. Okay, so the learning algorithm that we try to build will explore the possible function parameters so that based on the training experience, it can come up with the best function given its computational limitations. What does it mean to say is that if we have 100 number of points, then it might be possible that a single hypothesis or a single model may not cover or may not fit each of those 100 training points very accurately or fully. So in that sense, or there might be a computational limitations that to learn the parameters, we have limited number of constraints. So keeping in mind those constraints, we can't have a model or we can't have a hypothesis that can fit all the training points, let's say. So in that case, what we will do is we try to get the best possible. That means we just try to minimize the error, training error, as much as. Now, coming to a little formal way, so given a data set D, a task T, and a performance measure P, a computer system is said to learn from data D to perform the task T if after learning the system's performance on T improves as measured by P. That's a formal definition. In other words, the learned model helps the system to perform task T better as compared to no learning. And after learning, it is performing better. Now, learning is usually divided into these three types: supervised, unsupervised, reinforcement learning. So many of you are already aware of these. So, but those who are not aware, this is very important in machine learning point of view. So that's why it's important to discuss it. So, coming to supervised learning, so the main idea here is that for every data instance, we have the input and we have the corresponding output, that is label. Okay. And for machine learning system, we'll build a model based on this data. So we have input also and output also, and we pass both input and output. This is the training data. We pass this data, and we based on this we build this learning algorithm. Using the learning algorithm, we build this model, and on this model we give a new input without a label y, and on this new input we see what our model predicts. So this is not the actual output for this input, this is the predicted output by our model for this new input x, and at the last we check based on this predicted output and the actual output of this input x. On the basis of that we check how much accuracy our model has. Okay, so given a new observation x,
we will predict the corresponding y. This is the supervised learning. Supervised learning में हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है ट्रेनिंग टाइम पे, ठीक है, सुपरविजन के अंडर हो रहा है ये, मतलब यहाँ पे सुपरविजन हो रहा है कि कैसे प्रेडिक्ट करना है, आउटपुट आपके पास है, आप आपको दिया गया है कि आपको किस टाइप का आउटपुट लाना है, उसके सो दैट इज नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। ऑन द अदर हैंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास सिर्फ इनपुट दिए हुए होते हैं, ट्रेनिंग डेटा में भी हमारे पास लेबल्स नहीं होते, तो द लर्निंग एल्गोरिथम विल प्रोड्यूस क्लस्टर्स इन दिस फॉर्म, क्योंकि उसे लेबल्स तो पता नहीं है, सो वो क्या करता है कि जो सिमिलर टाइप्स के इनपुट होते हैं उन्हें एक क्लस्टर में, क्लस्टर मीन्स अ काइंड ऑफ ग्रुप, सो जो सिमिलर टाइप के इनपुट होते हैं उन्हें एक साइड में रख दे, एक क्लस्टर में रख देगा, एंड जो सिमिलर, सो ग्रुप कर देता है बेसिकली पॉइंट्स को, जो ज्यादा सिमिलर टाइप के होते हैं उन्हें एक क्लस्टर में और जो थोड़े डिफर होते हैं उन्हें अलग अलग क्लस्टर में, so based on the similarity of the data item it creates clusters, okay, and from this learning algorithm we get these clusters, that is unsupervised learning. Third is reinforcement learning. In this particular stage the agent takes an action and the environment goes to a new state and gives some reward to the agent. That reward may be a positive or a negative or penalty in fact, and can be nothing at that particular time step, but the agent is continually acting in this world. So reinforcement learning को हम और क्या कहते हैं, रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। सो इसमें क्या होता है, एजेंट एनवायरनमेंट आपने पढ़ा था, हमने एआई स्टार्ट ही यहीं से की थी। सो इन दिस देयर इज नो एक्चुअली हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस डेटा का ये आउटपुट है, उस डेटा का ये आउटपुट है। यहाँ पे क्या होता है, एजेंट टेक सम एक्शन, एनवायरनमेंट की स्टेट चेंज होगी, उसके बाद अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एक्शन एनवायरनमेंट रिएक्ट्स, कि जैसे कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल देयर इज अ रिएक्शन, so for this action that is performed by the agent of the environment has a reaction, in the reaction environment can give a reward, can give a penalty or can do nothing, so it is not always that हमें in return reward ही मिलेगा, in return penalty ही मिलेगी, हो सकता है कुछ भी ना। okay, for example when a child learns to ride a bicycle, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका। सो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि जब वो बाइसिकल चलाना सीख रहा होता है, सो सपोज करो इट देयर इज अ चाइल्ड एंड ही इज लर्निंग अ बाइसिकल, एंड थोड़ा थोड़ा उसे आ गया है बाइसिकल चलाना, नाउ ही इज राइडिंग द बाइसिकल, सडनली उसके सामने जो रास्ता है वो थोड़ा हिली है, थोड़ा सा हिल है उस पे, रैंप है काइंड ऑफ, जैसे उसके घर का रैंप है फॉर एग्जाम्पल। सो अभी वो चाइल्ड उसे पता नहीं कि हिल या रैंप पे कैसे चढ़ाना है, सो वो क्या करता है, बिल्कुल रैंप से जस्ट पहले जाके, रैंप जहां से स्टार्ट होता है वहां पे जाके उसने ब्रेक लगाए पहले, और अब वो सोच रहा है कि चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं, और फिर उसने सोचा नहीं मैं चढ़ाता हूँ, तो वहां से उसने एकदम से एनर्जी लगा के पैडल किया और रैंप पे चढ़ाने की कोशिश करी। ओके, एट दैट टाइम क्या होगा, सी रैंप पे अगर हमें साइकिल चढ़ाते हैं तो थोड़ा पीछे से हम तेज स्पीड में लाते हैं तब वो चढ़ती है, अगर आप बिल्कुल ही रैंप के पहले जाके साइकिल पे ब्रेक कर दोगे और फिर पैडल मारोगे, सो वो हल्का सा पुश होगी और रुक जाएगी, राइट, ऐसे ही होगा। सो ही डिड द सेम मिस्टेक, सो उसने रैंप से जस्ट पहले जाके ब्रेक लगा दिए, और अब उसने डिसाइड किया मैं रैंप पे चढ़ाऊंगा, और वहीं से वो पीछे नहीं ले गया, वो उसने वहीं से एकदम से एनर्जी से पैडल मारा, तो क्या हुआ, बाइसिकल हल्की सी आगे गई और फिर वहां रुक गई। अब जब वो रैंप पे हल्की सी आगे बढ़ गई, सो उसका बैलेंस, उसका पैर, इट माइट बी नॉट ऑन फ्लोर, सो वो वहां से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। So in that case, what it gets in return? Would that be a reward? Would that be a penalty? Would that be nothing? क्या होगा उस केस में? उस केस में इट इज अ काइंड ऑफ पेनल्टी, कि उसे पता चला, उसे गिरा, वो चोट लगी, माइट नॉट भी लगी, बट उसे पता चल गया ये जो स्टेप मैंने लिया था वो गलत था। सो वुड दैट चाइल्ड रिपीट दैट स्टेप अगेन? नो,
बिकॉज सो दिस इज समथिंग लाइक फॉर एनी एक्शन, जब हमें रिटर्न में कुछ मिलता है उससे हम लर्न करते हैं। सो रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग, अगर वो हो सकता है वो दूसरी ट्रिक अपनाता जो पीछे से स्पीड से आ रहा होता और एकदम चढ़ जाता तो उसे पता लग जाता, हाँ ऐसे ये इस ट्रिक से रैंप पे चढ़ाई जा सकती है बाइसिकल, तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड। सो दिस इज नो पर्टिकुलर लेबल कि हाँ ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दिस इज जस्ट अ रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग कि कुछ एक्शन करोगे आप, बदले में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो अगेन इट इज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। Okay, this is reinforcement learning, and this is a again this is a separate topic of discussion or separate topic of, in fact इस पे course होता है पूरा reinforcement learning, and this is also a very booming area nowadays, और बहुत research इसमें चल रहा है। Okay, so let's see supervised learning in a little detail. Okay, so it learns a target function that can be used to predict the values of discrete class attributes. एग्जाम्पल अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। सो यूजुअली इसमें प्रेडिक्शन वाले टास्क मेनली होते हैं सुपरवाइज लर्निंग में, क्योंकि लेबलिंग्स होती हैं। सो फॉर एग्जांपल क्लास लेबल्स मतलब कुछ जैसे हमारे पास फीचर्स होते हैं, तो एक कॉलम उसमें होता है क्लास एट्रीब्यूट का। ओके, एंड दिस इज नोन एज यूजुअली जनरली सुपरवाइज लर्निंग और इंडक्टिव लर्निंग भी। एक्चुअली दीज टर्म्स आर, आप कहीं पे रेफर करोगे तो इंडक्टिव लर्निंग कुछ और हल्का सा डिफरेंस बताया गया है, कहीं जगह सेम है, बट एज ऑफ नाम ये रखते हैं सुपरवाइज लर्निंग हमसे। okay, so for example these are some kind of application that comes under the supervised learning. A credit card company receives thousands of applications for new cards. Each application contains information about an applicant, such that its age, marital status, annual salary, outstanding debts, credit rating, etc. And the problem is to decide whether an sorry to decide whether an application should approve, or to classify applications into approved or not approved. So based on these features values, we need to the application needs to decide whether uh, that application should be approved for credit card or not. Okay, so that is a kind of supervised learning technique जहाँ पे लगता है। Okay, so data, if we came across a data about this, so a set of data records जहाँ पे k attributes हो सकते हैं और वहाँ पे class होगी, so each example is labeled with a predefined class, जैसे इस केस में approved और not approved. And goal क्या होता है? To learn a classification model from the data that can be used to predict the classes of new cases or instances. ठीक है, तो एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो नई एप्लीकेशन के लिए आपके पास बहुत सारा डेटा था, आपने उस पे उसे ट्रेन करके फिट करके एक मॉडल तैयार कर दिया। अब कोई भी नई एप्लीकेशन आई क्रेडिट कार्ड की, आप जस्ट उस मॉडल में पास करोगे, उसका डेटा दोगे और आउटपुट ये निकलेगा कि एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है या नहीं। This is a kind of data. So, for example, if age has these three it's a kind of categorical attributes of categories बनी हुई है। Young, middle, old. It has job, false or true. It owns house, false or true. Its credit rating, fair, good, excellent. And class, ये label है हमारा कि it says that approved is yes and not approved is no. So this is just a snapshot of one data set. Okay, so it learns a classification model from the data. Use the model to classify future loan applications into, यहाँ पे लोन एप्लीकेशंस के लिए बोल दिया है, आप इसे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन पे सिंपली कंसीडर कर सकते हैं। देयर आर टू स्टेप्स इन दिस। सो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग का, लर्निंग का। सो हम अपनी एल्गोरिथम पे ये ट्रेनिंग डेटा लगाते हैं और हमें मॉडल मिलता है। After this model, then we apply the test data and we get an accuracy. Accuracy, it's said to be number of correct classifications divided by total number of test cases. Okay, so if suppose ये test data 100 instances थे और उसमें से मैंने 90 करेक्ट प्रेडिक्ट किए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सुपरवाइज लर्निंग है तो मेरे पास लेबल्स तो इनका होगा, तो मैं उन डेटा पे
लगा के जो मैंने प्रेडिक्ट किए 100 प्रेडिक्शंस मेरे पास आई, उन 100 प्रेडिक्शंस को मैं कंपेयर करूंगा उन 100 एक्चुअल लेबल से कि वो एक्चुअली क्या थे, और उसके बेस पे मैं एक्यूरेसी निकालूंगा कि मेरे मॉडल की कितनी एक्यूरेसी है। सपोज 90 मैंने सही प्रेडिक्ट किए, सो ऊपर आएगा 90 करेक्ट क्लासिफिकेशन, और टोटल केसेस है 100, तो 90 बाय 100, सो माय एक्यूरेसी इज 0.9 और 90%. Is another application, loan application data. So it predicts whether a loan should be approved or not. Performance measure हम यहाँ पे accuracy रख सकते हैं. There is no learning. Classify all future applications to the majority class. Yes. What is this is? It said that if the model is not learning anything, but क्या कर रहा है वो? हर एक application को कह रहा है हाँ approve कर दो, approve कर दो, approve कर दो. So in that case, uh, uh, सपोज जो एक्चुअल लेबल्स थे 15, मेरे पास टोटल केसेस थे, 15 टोटल इंस्टेंसेस थे, और उसमें से एक्चुअल लेबल्स में 9 में यस था, तो मैंने जब 15 के 15 को यस दे दिया तो मेरी एक्यूरेसी कितनी आएगी? 9/15, बिकॉज बिकॉज 9 मैंने करेक्ट प्रेडिक्ट किए हैं, बाकी सब में नो आना चाहिए था, बाकी 6 में जिसमें भी मैंने यस दिया हुआ, मैंने तो एक्चुअली सारे 15 में यस दिया हुआ था, बट उसमें से 9 करेक्ट थे. सो एक्चुअली मैंने कुछ लर्न नहीं किया, मैंने तो ब्लाइंडली सबको यस दे दिया. ओके, सो वी कैन डू बेटर देन दिस 60% एक्यूरेसी इफ वी हैव learned, we have make the model learn. What is the fundamental assumption of learning? So the distribution of training examples is identical to the distribution of test examples, uh, including future unseen examples. Okay, so what is this assumption is कि जो ट्रेनिंग सैंपल्स हैं हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट सेट होगा या टेस्ट इंस्टेंसेस आएंगे, that would have the same kind of distribution as the training examples. What does it mean is, suppose मैंने एक एप्लीकेशन है, let me use the tablet. Okay, suppose we have an application, we have an application जहाँ पे एक्चुअली 3 लेबल्स हैं. सपोज मैं किसी चीज का रिस्क डिटेक्ट कर रहा हूँ, risk detection for some context. Okay, and I have 3 labels: high, medium, low. Okay, ये 3 मेरे पास क्लास लेबल्स हैं. सो और ये सपोज 4 फीचर्स थे, x1, x2, x3, x4, and this is the label high, medium, low and so on. ठीक है, सपोज मेरे पास ट्रेनिंग डेटा था, टेस्ट डेटा था. ट्रेनिंग डेटा में मेरे पास थे 100 इंस्टेंसेस और इसमें थे लेट्स से 20. ठीक है, इस 100 में से लेट्स से 50 वर हाई, 50 वर लो और 50 वर मीडियम, और मैंने इसके ऊपर अपना मॉडल तैयार किया. मॉडल बना लिया. ठीक है, इस 20 में से 3, 3, 4, सपोज 3 वर लो, 3 वर मीडियम, 4 वर हाई, और फिर मैंने ये मॉडल पे ये टेस्ट डेटा लगाया. सो आप मुझे ये बताओ, क्या ये मॉडल इस टाइप इन डेटा को करेक्टली प्रेडिक्ट कर पाएगा? देखो यहाँ पे ट्रेनिंग में हमारे पास थे 50 हाई एंड 50 वर मीडियम, बट टेस्ट डेटा में लो भी है, मीडियम भी है, हाई भी है. जब मेरे मॉडल ने जब ट्रेनिंग किया, यहाँ पे लर्निंग हो रही है, लर्निंग इस डेटा से हो रही है, जिस डेटा को मैंने लर्न करने के लिए दिया था मॉडल को, जब उसमें कोई लो
लेबल का कोई इंस्टेंस ही नहीं है, so, मेरे मॉडल को यही नहीं पता कि डेटा के कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि वो लो होगा। लो के बारे में तो उसको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सो इट कांट प्रेडिक्ट दिस वन। सो ये हम एज्यूम करके चलते हैं जब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम अपना मॉडल बना रहे हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहेंगे हम कि ट्रेनिंग डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्टिंग डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इट्स नॉट सेम। ट्रेनिंग डेटा में लो टाइप के इंस्टेंसेस है ही नहीं, टेस्ट डेटा में लो टाइप के इंस्टेंसेस हैं। ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा हमारा ऑलमोस्ट ऐसे बटा हुआ है 30%, 30%, 40%। दिस वाज टेस्टिंग, बट ट्रेनिंग कैसे बटा हुआ है 0%, 50%, 50%। This low was zero in the training data. So that's why our model gets failed in predicting this low instances correctly at any cost. So this is an assumption that the training data set and testing data set has the same kind of distribution. So in practice, this assumption is often violated to certain degree. As I told you, ऐसा बहुत टाइम हो सकता है. So strong violations will clearly result in poor classification accuracy. अगर वायलेशन ज्यादा है यानी कि टेस्टिंग डेटा सेट में काफी डिसिमिलैरिटीज हैं, सो हमारी एक्यूरेसी में ड्रॉप। टू अचीव गुड एक्यूरेसी ऑन द टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग एग्जांपल्स मस्ट बी सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेस्ट डेटा। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट? नो? ओके, और स्ट्रेंथ कम है 43। इज एनीथिंग एल्स गोइंग ऑन? Okay, so let's continue. Now it's learning by induction. So what is learning by induction? Yes, learning by induction. So in the simplest form, we can say it's learning a function from examples. Okay, so induction, जैसे हम prove by induction करते हैं, in the same way it's learning a function from examples. So given is f, it's a target function, and examples of f where an example is a pair x comma fx, इस टाइप का ट्रेनिंग डेटा होता है, and examples might have noise. Noise को हम यहाँ पे outliers भी बोल सकते हैं. So the problem is we have to find a hypothesis h such that h is equal to f. Okay, what it tends to say is that, for example, हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे हमने पहला एग्जांपल अभी देखा कि this was features x1, x2, x3, x4 and this was nothing but fx. हम अपने y को क्या कह रहे हैं? fx. So ये हमारा डेटा था, लो मीडियम हाई, दिस so on. So अब मुझे इस डेटा से एक हाइपोथेसिस लर्न करना है, h which is as similar to fx, जितना सिमिलर हो सके, as much similar as fx, यानी कि this target function. So this is known as target function and this is known as hypothesis. Our target is to have a hypothesis which is almost same as the target function. That means prediction में error सबसे कम से कम. Okay, now construct or adjust h, for example this is an example, so consider these at the as data points. ठीक है, suppose training data ये है, this is fx, this is labels and this is x features मान लो इसे. So construct or adjust h, अब मुझे इस पे एक hypothesis learn करनी है and this you can think this is a outlier or noise. Although हम उसे देख सकते हैं ऐसे, ये अलग से है बहुत, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग से लग रहा है, so this could be outlier or noise. Now h is a consistent hypothesis if it agrees with f on all examples. तो उसे हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब वो हर एक एग्जांपल के लिए f के इक्वल होगी. सपोज हम यहाँ कर्व फिटिंग ही देख रहे हैं, सो ये देखो
डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या हो सकती हैं? एक ये हाइपोथेसिस है स्ट्रेट लाइन, बट यू कैन सी दैट देयर आर सम पॉइंट्स जो बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहे हैं और कुछ पॉइंट्स में हल्के डेविएशन, यानी कि हर पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेटली कवर नहीं हो रहा और कुछ पॉइंट्स तो दूर हैं इस लाइन से। ये हमारी हाइपोथेसिस है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में देखो, ये ग्रीन लाइन क्या कर रही है? सारे सारे पॉइंट्स को जितना हो सकता है कवर कर रही है, बस इसको उसने कवर नहीं किया क्योंकि दिस इट थिंक्स एज आउटलायर। एकदम से हाइपोथेसिस डेविएट हो जाएगी ना इससे। ये ब्लू लाइन देखो, इसने इग्नोर कर दिया कोई आउटलायर है या नहीं, इसने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की, ठीक है। एंड सी दिस येलो लाइन, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी सीधी नहीं जा रही है, देयर इज मच डेविएशन, दिस वन, ठीक है। नाउ जस्ट टेल मी which hypothesis do you think is the best out of these? Red, green, blue, or orange, or yellow? Red. Red. Anyone else? So maybe green one. Maybe green one. Okay. So actually the right answer is green one, because red कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गई है, ठीक है। तो रेड में कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो बिल्कुल दूर हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन ये भी दूर है और यहाँ पे भी। तो जो पॉइंट्स इजीली कवर हो सकते हैं, मतलब हम लाइन, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन की, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सबसे सिंपल होती है, इस कर्व की इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी हाइपोथेसिस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को बेटर कवर कर दिया रादर देन दिस रेड लाइन। इसमें देखो इस कर्व में बहुत ज्यादा डेविएशन है, बहुत ज्यादा डेविएशन है। ये एक सिंपल कर्व है, ये एक सिंपल कर्व नहीं है, और ये तो एक सिग्नल ही लग रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ थ्योरी नोन एज ऑक्सम्स रेजर थ्योरी। वो सॉरी ऑकहैम ऑकहैम रेजर थ्योरी। ऑकहैम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था दैट सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस हैज द मोस्ट एक्सप्लेनेटिव पावर। Okay, simplest hypothesis has the most explanative power. So in this way, hypothesis 2 is the simplest one that fits the data reasonably well. Complexity of a hypothesis can be measured, for instance, in this case, by the degree of the polynomial. जैसे एक सिंपल लाइन है, उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 1। जो ग्रीन लाइन है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2, राइट? Okay, so with this we end this concept of learning here. Now I have set this calendar type, like today is 12th and so अभी ये कैलेंडर देखो और फिर मुझे इसके बारे में एक बार आइडिया दो कि इज दिस schedule, is this plan is fine for all of you or not? So let me stop the recording first.